Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Akansha Parimu. Let's take a look at what made news this week. Basic services failure sparks anger across Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan. Winter Wonderland arrives in Leh and J&K, attracting tourists from across the country. National Martial Arts talent gains expertise from Indonesian coach in J&K. And winter festivities boost Patni-top tourism in India's Jammu and Kashmir. In our Incredible India segment, we'll discover Goa as a vibrant coastal land where history lives in its food, local kitchens preserve tradition, and every meal rich with seafood, spices and sweets offers a taste of its cultural legacy. In Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan, frustration among ordinary citizens is steadily intensifying. In Murtazabad, residents say prolonged neglect of basic civic services has left them with little confidence in institutions meant to serve them. What is unfolding in this remote region reflects a larger pattern across POGB, where repeated appeals go unanswered, essential needs remain unmet, and public patience is being stretched to its limits, creating growing tension and simmering unrest among the local population. We have a report. Access to communication has remained a luxury in remote regions like Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan. It is vital for education, work, and daily coordination. When such access fails for long periods, communities feel isolated and ignored. In POGB's Murtazabad, residents say months of unresolved issues have compelled them to issue a clear ultimatum, sending a strong signal that continued silence or inaction from service providers will no longer be tolerated by the community. ये मुर्तज़ाबाद के मुकाम पर नौजवानों के साथ अमायदीन के साथ मिलकर हमने एहतिजाजी तौर पे रोड के केज बंद किया है। वजूहात मुख्तलिफ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा SCO की कारकर्दगी के ऊपर। पिछले 2 महीनों से यहाँ पे नेटवर्क गायब है। यहाँ पे टावर लगा हुआ है, मुख्तलिफ बहाने करते हैं, कभी कहते हैं डीजल नहीं है, कभी कहते हैं हमारे पास बिजली का लाइन जो है वो स्पेशल नहीं दिया हुआ है। ये हमारे मसाइल नहीं है। SCO एक प्राइवेट तिजारती मरकज है और इससे हमें कोई गरज नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे मुर्तज़ाबाद में 5000 से ज्यादा यूजर्स है। ये मुख्तलिफ पैकेजेस करवाते हैं, वो एक्सपायर होते हैं, जाया होते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन काम करने वाले मुतासिर है, यहाँ पे तुलबा मुतासिर है, यहाँ पे मुख्तलिफ जो ऑनलाइन काम करते हैं, तमाम तर चीजें यहाँ पे मफलूज हो चुकी है। हमने बारहा रिक्वेस्ट की, दरखास्त की, कॉल्स की, कोई रद्द अमल नहीं आता है। आज हमने अलामती एहतिजाज किया है। हम 24 घंटे का टाइम देते हैं SCO को अपनी कारकर्दगी बेहतर करे, नेटवर्क बहाल करे। बेसूरत दीगर 24 घंटे बाद अगर हमारे मुतालिबात मनोवन तस्लीम नहीं होते हैं तो यहाँ पर हम धरने की तरफ जाएंगे। हम तब तक यहाँ रोड पर बैठेंगे जब तक हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होते हैं। Residents say communication failures are only one part of a wider struggle for basic fairness. Alongside unequal access to essential services, people highlight declining standards in daily necessities, including poor quality food, vegetables, and other essential supplies reaching local markets. While residents stress that their demands are modest, continued neglect has steadily eroded patience. The warning from Murtazabad is unmistakable. Without timely corrective action, frustration will only deepen and public anger will grow further. हमारा दूसरा जो मसला है वो मसला ये है, यहाँ पे बिजली जो है 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे बिजली दी जाती है और वो भी पिछले 28 घंटों से यहाँ पे बिजली मुकम्मल तौर पे नहीं है। सेंटर में इस वक्त 8 घंटे बिजली है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें 24 घंटे बिजली दे दे, लेकिन मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए। बेसूरत दीगर अगले अलाह अमल जो होगा वो शदीद होगा और सख्त होगा। तीसरा मसला जो है, हम
95% आटा इस्तेमाल करते थे, उसको हमने उसकी मियार बेहतर करने के लिए 85% पे हमारी ला रहे हैं, जिसमें हमारा जो है वो कोटा आटे से कट चुका है। उसके बावजूद बदबूदार आटा, नाकाबिल इस्तेमाल गंदुम, ये रविश तर्क कर दे, वरना इन 3 मसाइल को लेके हम अगले लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे इन मसाइल को गौर से नहीं सुना गया और इनका हल तलाश नहीं किया गया तो उसके बाद हम धरने की तरफ जाएंगे। What emerges from Murtazabad's reflection of deeper unrest across Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan. Citizens say neglect has become routine, accountability remains elusive, and essential services are unreliable. As warnings grow sharper, the responsibility now rests squarely with those in control. Addressing these grievances promptly could erase rising tensions, but continued inaction risks pushing an already strained population towards prolonged confrontation and widespread public frustration that cannot be ignored any longer. Leh has turned into a winter wonderland with the season's first snowfall, marking the arrival of winter and bringing multiple benefits to the region. The snowfall is expected to revive tourism, provide economic relief and support agriculture and horticulture while also offering environmental and health benefits. Meanwhile, several parts of Jammu and Kashmir also received their first snowfall, transforming the meadows into a stunning white landscape. Let's take a look. Leh has transformed into a breathtaking white wonderland with the season's first spell of snowfall, a development expected to draw more tourists to the region. Thick layers of snow have enveloped the town, turning streets, trees, houses and fences into a picture-perfect winter landscape. Visuals from the region show snow-laden branches and rooftops gleaming under the winter chill. As temperatures dipped, Leh recorded a minimum of -2 degrees Celsius, adding to the crisp, serene atmosphere and marking the true arrival of winter in the region. विंटर में अच्छा टूरिज़्म हो, यूटी लद्दाख में खासकर हमारे द्रास में लोगों को सर्दियों के खेल में मशहूर हो। यहाँ पे स्नो सिक्की, आइस सिक्की के खेल खेला जाए और अच्छा सुखों पे यहाँ पे, तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा बर्फ़बारी हुआ है इस साल का पहला बर्फ़बारी। तो हमारे लोगों की उम्मीद है कि और भी अच्छा बर्फ़ हो, जिससे हमारे लोगों के जो खर्चात हैं वो पूरे हो। ज़मीनी खर्चात जैसे खेलने वालों के लिए अच्छा टूरिज़्म का स्कोप मिले। Meanwhile, the iconic tourist destinations of Gulmarg and Sonmarg in Jammu and Kashmir have witnessed the season's first snowfall, coinciding with the onset of the 40-day harsh winter period, Chillai Kalan. Despite the chill, the fresh snowfall has brought relief and cheer to tourists and locals alike, transforming the landscapes into a stunning white wonderland and reviving winter tourism across the region. The fresh spell has also lifted hopes among hoteliers and tourism stakeholders, particularly in Sonmarg, who anticipate an increase in tourist activity in the days ahead. 21 को मैं गुलमार्ग आया, जहाँ पे मैंने स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल देखा, जो मेरा ड्रीम था और मेरा सपना था। मैं इतनी बर्फ पहली बार अपने लाइफ से देखा, आसमान से गिरते हुए देखा। मैं यहाँ के ऐसा लगता मैं जन्नत पे आ गया। ये मेरा ड्रीम था, वो पूरा हो गया। बाहर वालों के लिए संदेश यही है कि भाई पैसे यहीं रह जाएंगे, आया करो कभी घूमने के लिए, आओ आके देखो कितनी प्यारी जगह है। ऐसा लगेगा ना कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। ये बहुत ही प्यारी जगह है और देखने से तो इतनी अच्छी है कि आंख में ये समा गई है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा लाइव स्नोफॉल देख रहा हूँ और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हम लोगों का और बहुत मजा आया और बहुत बड़े ग्रुप के साथ में आया था और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, अभी भी कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग जो है एक बार स्नोफॉल लाइफ में जरूर देखें। Snowfall across Leh and Jammu and Kashmir has ushered in the winter season, adding a magical touch and transforming the region into a mesmerizing winter wonderland. The pristine snow blankets mountain peaks, valleys and high-altitude passes, creating breathtaking landscapes. Ladakh's serene and snow-covered terrains captivate visitors, offering unmatched natural beauty and tranquility.
This enchanting scenery makes the region an unforgettable destination for snow lovers, adventure enthusiasts, and those seeking a peaceful winter escape. In a major push to elevate India's future Olympic prospects, Srinagar in India's Jammu and Kashmir is hosting an intensive training program led by Indonesian coach Suhud Idrantno. Young Pencak Silat and martial arts athletes are learning cutting-edge techniques and competition discipline essential for the global stage. Over the last 3 months, players from different states have been undergoing 2 intensive sessions each day at the indoor stadium Srinagar, determined to enhance their performance for the world stage. Have a look. In Srinagar, a specialized martial arts initiative is giving young athletes a rare chance to learn Pencak Silat directly from its country of origin. Under the guidance of an expert coach from Indonesia, nearly 300 players across India and the Kashmir Valley are participating in live demonstrations and intensive training sessions. This program is helping them master authentic techniques, refine their style, and gain invaluable exposure, preparing them for the upcoming international competitions. ये एक फेडरेशन जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उनका इनिशिएटिव है कि ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सलेंस कैंप चल रहे हैं जिनको इंडोनेशिया से कोचेस हर किसी कंट्री में गए हैं। ये 90 डेज़ कोर्स है। 90 डेज़ के एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें हमने 15 डेज़ का बैच बनाया है और हर बैच में करीब 50 बच्चे आ रहे हैं और हमने ऑल ओवर इंडिया हर 15 दिन में नए 50 बच्चे आके नए रूल्स और रेगुलेशंस और एक्सलेंस के साथ की जो नई टेक्निक्स है और जो स्टाइल है बेसिकली स्टाइल जो है पेंचक सिलाट का वो मैटर करता है। अगर आप स्टाइल में नहीं खेले तो आपको पॉइंट नहीं मिलता है, तो वो स्टाइल डेवलप करने के लिए, वो जायका लाने के लिए इंडोनेशिया से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। फाउंडेशन जो सिलाट की पड़ी है वो इंडोनेशिया से ही है और उनसे अच्छा कोई स्टाइलिस्ट हो नहीं सकता। सो दैट इज़ वाई इंडोनेशियन कोचेज आर देयर इन द बैच। Having an Indonesian coach on site gives young athletes an unparalleled chance to master Pencak Silat in its true form. These rigorous sessions sharpen technique, build discipline, and boost confidence, inspiring players to push their limits. For the participants, the training serves as a vital gateway to national and international competitions, including the Olympics and Asian Games, while instilling the motivation and skills needed to represent India at the highest level of the sport. Persilat Federation, World Federation, sent I am to the Indian Federation for coaching Indian athletes, national athlete in Kashmir. This program, Pencak Silat, route to Olympic Games in USA 2028. This program for Asian Games and next year in Japan. Kashmir very good, strong, but maybe yes, good. Girl athlete, boy athlete good in Kashmir. Good attitude and good perform excellent. Players attending the camp are experiencing first-hand intensity and precision of Pencak Silat training. They are learning advanced techniques, refining their skills, and gaining valuable hands-on experience under expert guidance. The daily sessions challenge them physically and mentally, boosting their confidence and determination. For these young athletes, the camp is an opportunity to grow, stay motivated, and prepare themselves to compete at national and international levels with renewed focus and energy. ये
नेशनल एक्सीलेंस कैंप है यहाँ पे, जो हम ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली इन्होंने ये कैंप इसलिए करवाया है कि हमें और नॉलेज मिले और रूल्स वगैरह, हमें रूल्स के बारे में और प्रिपरेशन मिले और फाइटिंग के बारे में और नॉलेज मिले, तो ताकि हम ओलंपिक्स में इसके लिए ये परफॉर्म करेंगे। इसीलिए हम लोगों का ये कैंप मिला है यहाँ पे। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवा रहा है, तो बहुत नॉलेज भी मिली है। ये 3 महीने से ये कैंप चल रहा था और बहुत नॉलेज भी मिली है हमें इससे, बहुत कुछ सिखाया है इसने। हमें इंडोरेंस ट्रेनिंग कराई जाती है, पावर ट्रेनिंग कराई जाती है और बेसिकली टेक्निकल पूरा पॉइंट सिखाए जा रहे हैं, जो कि अभी न्यू टेक्निकल पॉइंट अभी रिसेंटली में आए हुए हैं, उनको सिखा रहे हैं। क्योंकि जो पुराने टेक्निकल थे वो अभी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है। क्योंकि ओलंपिक्स में ये गेम आ रहा है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लाई जा रही हैं, कुछ हटाई जा रही हैं। एक बेसिक एक गेम स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, इस वजह से पूरा हमें टेक्निकल चीज़ें सिखाई जा रही हैं कंटिन्यू। Jammu and Kashmir is making remarkable strides in sports, empowering youth with access to professional training and international standard facilities. From martial arts to other competitive disciplines, young athletes are receiving guidance that prepares them for national and global arenas. Coupled with investments in infrastructure and skill development, these initiatives ensure opportunities reach even remote areas, fostering talent, discipline and confidence. This approach highlights Jammu and Kashmir's dedication to promoting sports alongside preserving its cultural and social heritage. In a positive turn for India's Jammu and Kashmir, Patnitop's tourism sector witnessed a revival during the recently concluded Christmas and New Year festivities, aided by the season's first snowfall and proactive government initiatives. Hoteliers and tourism-dependent businesses, which had been hit hard by the April 2022 Pahalgam terror attack and NH44 closures due to landslides, welcomed the festive influx of visitors, marking a renewed hope and gradual restoration of the region's popular tourist resorts. Take a look. Tourists have returned to Jammu and Kashmir in full swing for the recently concluded Christmas and New Year celebrations, bringing a much-needed boost to the UT's tourism sector. Popular resorts in Patnitop and surrounding areas saw a surge of visitors enjoying the scenic landscapes, snowfall and festive cheer. Before the Christmas and New Year celebrations began, many hoteliers and managers had expressed strong hope that the festivities would revive their businesses. इस बार काम का काफ़ी मंदा ही रहा, तो एक्चुअली हमारा जो रोड शोड वगैरह जो फ्लड की वजह से सारा कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई थी, तो उसकी वजह से अब थोड़ी उम्मीद जाग रही है काम की। क्या भाई क्रिसमस डे भी आ रहा है हमारा जी 25, तो उसके बाद 31 न्यू ईयर भी आ रहा है, तो थोड़ी उम्मीद है अब थोड़ा काम चल पड़ा है। तो बाकी अब है कि अब स्नोफॉल भी हो जाएगी तो काफ़ी थोड़ा काम हमारा बढ़ ही जाएगा। आजकल है, अभी थोड़ा है इम्प्रूवमेंट हुआ, थोड़ा काम पहले से चल रहा है, थोड़ा चल रहा है। During the Christmas and New Year festivities, tourists in Patnitop were captivated by the valleys, snow-dusted hills, fresh winter air and stunning landscapes. Families and friends celebrated the season with joy, enjoying local delicacies, music and seasonal activities while exploring the scenic beauty around them. The festive atmosphere, coupled with Patnitop's natural charm, offered visitors a refreshing escape, leaving them mesmerized and creating lasting memories of a winter celebration that beautifully blended fun, culture and nature. Tourists were so excited for the festive celebrations that many expressed their happiness and high hopes, saying they were glad to choose the serene and beautiful Patnitop Valley as their celebration destination. हमारी पूरी फैमिली हम लगभग 20-25 लोग घूमने आए हुए हैं। हम यहाँ सेकंड टाइम आए हुए हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है और हल्की हल्की मंद धूप है और ठंडी ठंडी हवा, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मूड में है, न्यू ईयर मना के ही जाएंगे यहाँ से। हाँ, किसमिस है, हाँ उसको विश करेंगे। हम यहाँ सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने गए, आज पटनीटॉप यहाँ घूमने आए हैं, फिर शिवखोड़ी जाएंगे। एक हफ्ते तक जब तक न्यू ईयर आएगा प्रोग्राम बनाते रहेंगे कहीं ना कहीं।
The recent festive season and fresh snowfall have brought tourists back to Patnitop, reviving local businesses and filling the valley with energy. Hoteliers and residents are optimistic as the growing number of visitors boosts hotels, eateries and markets. The winter charm of the hills coupled with the festive cheer has renewed hope among locals who look forward to an even higher influx of tourists in the coming weeks, signaling a promising turn for the region's tourism. आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि जैसे न्यू ईयर भी है और ये अपने क्रिसमस भी आ रहा है, इस वजह से ऐसा लगता है, उम्मीद है कि आने वाला टाइम अच्छा होगा और बर्फबारी के भी हो सकता है, हो जाए, चांसेस बने हैं, तो पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये जो 31 जो यहाँ पे बनेगा, वो उम्मीद है कि यहाँ पे क्राउड होगा। लोग अभी बिल्कुल आ रहे हैं और आने की उम्मीद भी है कि आहिस्ता आहिस्ता क्राउड जो है बढ़ेगा यहाँ। Jammu and Kashmir's tourism sector is steadily regaining momentum, with the government and administration taking focused measures to promote the region as a prime travel destination. Enhanced infrastructure, improved connectivity, and initiatives highlighting the valley's natural beauty and cultural heritage are drawing more visitors. These efforts support local businesses and livelihoods while preserving the region's rich traditions, signaling a promising and sustainable future for tourism in Jammu and Kashmir. Goa, India's sunshine state, where turquoise waters meet Portuguese charm and every street carries the aroma of coconut, spices and stories. Beyond its beaches and nightlife, Goa is a paradise for food lovers, from sizzling curries and fresh seafood to the layered sweetness of bibinka. Many tourists explore Goa's traditional restaurants and coastlines, discovering its culinary soul one plate at a time. Well, as I walk through the colorful lanes of Panjim, every corner seems to hum with old Portuguese melodies, pastel houses, tiled roofs, and that unmistakable colonial charm that still defines Goa's soul. But it's the aroma that truly delves in. Freshly grilled fish, buttery lobsters sizzling on the pan, and the cafes serving Goan samosas and sweet buns that melts into your mouth. And of course, no Goan meal ends without the royal dessert, bebinka. Rich, layered and full of love. Here in Goa, food isn't just eaten, it's felt. Jeva goinche, moga aiche. Panjim wakes up early. By sunrise, locals queue at Cafe Bhosle, a name as familiar to Goans as the ocean breeze itself. For decades, it has been the heart of Goan street food, serving flavors as honest as the people who gather here every morning. From Goan buns, deep fried, fluffy, lightly sweet, to bhaji pav, mirchi pav, Cafe Bhosle doesn't just serve breakfast, it serves tradition. Here food is simple but soulful. No frills, no fancy plating, just comforting flavors that fuel daily life. At Cafe Bhosle, mornings doesn't just begin with breakfast, they begin with belonging. टूरिस्ट लोग इधर गोवा में आते हैं, इधर हमारे होटल पे आते हैं, बोला तो सर वटाना भाजी खाने के लिए और स्वीट बंस खाने के लिए, कोई भी रहने दो, महाराष्ट्र रहने दो, गुजरात साइड रहने दो, कर्नाटक रहने दो, तो पूरा वटाना भाजी और बंस खाने के लिए आते हैं सर ज़्यादा लोग। वटाना भाजी तो बहुत फेमस है सर, स्टार सीरियल एक्टर लोग भी आते हैं, स्टार एमएलए एमपी लोग, हमारे कर्नाटक सारा एमएलए एमपी लोग भी आया है और वो लोग को बहुत अच्छा लगा सर इधर का भाजी। As the sun dips and tides shimmer, Goa's flavors move from street corners to riverside kitchens. The Fisherman's Wharf, one of the state's most beloved seafood destinations, brings the sea straight to the plate. Fresh catch arrives every day: pomfret, kingfish, prawns, lobsters, cooked with age-old recipes passed down like heirlooms. From the iconic calamari fish, tangy and red with spice, to the juicy lobsters stuffed with fiery masala, every dish here tastes like salt, ocean wind and legacy.
Live music plays, waves brush the deck, and plates carry the scent of the sea. It was started, the brand started in year 2005. So hardly there was any place where people can get a proper seafood with lots of varieties of preparations. So the fishermen were bring it into the Goan market, and gradually it got very much popular. Guests enjoys a lot. We get many guests from different parts of the countries as well as different parts of the state of India, and they enjoy the seafood very much over here. And finally, no Goan meal ends without something sweet, something layered, delicate and rich with history. Goa's most treasured dessert, bibinka, remains the queen of Indo-Portuguese cuisine. At the Goan kitchen, bibinka is crafted slowly, the traditional way, layer by layer, baked patiently for hours, sometimes days. Coconut milk, egg yolk, sugar, ghee, simple ingredients, but a recipe that demands devotion and time. Bibinka basically is called as the queen of Goan desserts, and no feast, no celebration will ever be complete without having a bibinka on the table. It's a 7-layered cake which is a delicacy by itself, which is made of coconut juice and eggs and butter or ghee and sugar. And flavoring is nutmeg, and we'll have a bit of caramelized sugar in it to give it that golden color. And bibinka is one of the best Goan desserts ever to taste. And bibinka somehow is famous all over the world as one of the best desserts that you can find in Goa. The demand is only increasing. But just a few streets away stands a name synonymous with grandeur, Mr. Baker's 1992. A century-old legacy, famed not only for bibinka, but for its royal dessert collection. Here, dessert is not just food, it is art, layered with heritage and elegance, plated like royalty. Our USP is you come here for your traditional Goan sweets and savories, and they are of the best quality that you get here. You know, it's so we're well known for our Goan desserts like bibinka, the queen of desserts. We do a special wood-fired bibinka here that gets exported all over the world, because a lot of Goans are all over the world, right? So when they go back, you know, to wherever they live, they have to take like a wood-fired bibinka with them. In Goa, food is more than hunger. It is identity shaped by the ocean, culture and time. From the bhaji pav breakfasts at Cafe Bhosle to prawn-laden nights at Fisherman's Wharf to the slow sweet magic of bibinka at the Goan kitchen and Mr. Baker's 1992. Every plate carries the warmth of a coastal home. Goa teaches us something simple. Food is the way a place speaks. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.